occasion, let's welcome none other than our chief guest, Honorable Governor Shri Ramesh Bayas. Let's give him a warm, warm round of applause. Welcoming His Excellency on the stage, along with Shri Chandrakant Salunkeji. It is time for us to acknowledge our Mother Earth. We're talking about standing up for the national anthem. Let's all acknowledge, and could we all, in deep gratitude, have the national anthem. पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Friends, the SME Chamber of India is one of the leading organizations working for the last 30 years and supporting SMEs from various fields for business growth, export promotion, exploring emerging business opportunities from the local and global markets, identifying the partners for joint venture, technology transfer, contract manufacturing, marketing, distribution, franchise, channelizing, finance and investment, international collaborations, as well as business advisory services for transforming business activities and the enhancement of creditworthiness and the credibility of SMEs and manufacturing industries. The Chamber, under the dynamic leadership of Shri Chandrakant Salunkeji, is on the forefront for adding resilience to the regulatory framework and the timely policy implementation, as well as resolving issues and grievances to provide a level playing field. On that note, it is now my honor, after the national anthem, I think every event would love to have our chief guest and our guests of honor to kindly join us for the lamp lighting. Lamp lighting, how could we not felicitate our Honorable Governor Shri Ramesh Bayas ji. Sir, we'd request you to please step forward along with Shri Chandrakant Salunkeji. We'd love to felicitate you. Ladies and gentlemen, a big, big round of applause. Our Honorable Governor has taken out his valuable time today. Of course, if we could also felicitate Shri Anup Sahay ji, could we have the moment right now to be captured for the history in making. Once again, a big, big thank you. Thank you so much, sir. Let the applause continue, ladies and gentlemen. And if you could have the honor of felicitating Shri Charles, can we have a big, big round of applause? Honor having you out here. These are the moments we all wait for. We've got such incredible leadership along with, let the applause continue, ladies and gentlemen, our chief guest, our Honorable Governor. Well, with that, with such leadership, and we value their time, we value their expertise, we value their guidance, and it couldn't be a better moment to now call upon Shri Chandrakant Salunkeji to deliver welcome and an introductory speech. Let's give him a mighty round of applause. On behalf of SME Chamber of India and Maharashtra Industry Development Association, it's my immense pleasure to welcome Honorable Governor Sri Bayas Sahab at this 30th Foundation Day celebration, as well as we have organized one panel discussion at India SME Leadership Summit, as well as we are felicitating
around 20 successful entrepreneurs by India SME Excellence Awards and Pride of Maharashtra Awards. And friends, all of you are also, thank you for especially for attending this program. My friend Anup ji, Charles ji, and all the dignitaries sitting in this audience gathering, particularly, I am thankful to the Honorable Governor Sahab कि आज के इस मौके पर आपने टाइम दिया, और आज महत्वपूर्ण ये बात है कि आज हमारे एंटरप्रेन्योर्स को आप फेलिसिटेट कर रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। गए 9 साल से भारत देश की प्रगति उन्नति आप देख रहे हैं। एक डायनामिक लीडरशिप हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, जिन्होंने सही मायने में लेवल प्लेइंग फील्ड बनाई है, और उस माध्यम से एसएमई सेक्टर को अगर देखा जाए तो आज का सही वक्त है। आज 30 साल पहले जब मैंने ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया था तो एसएमई कह के मुझे हंसते थे लोग, क्या एसएमई कर रहे हो। और जब मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रेजेंस में हमने एक दिल्ली में एक अवार्ड प्रेजेंटेशन रखा था, उस वक्त कहा कि पंत प्रधान जी हमें छोटों को छोटा मत रखिए, मतलब एसएसआई उस वक्त था, आपको आप जानते हैं। तो उन्होंने आप चाहते क्या हो, मैंने कहा हमारी क्रेडिबिलिटी इंटरनेशनल मार्केट में बढ़नी चाहिए, तो आप कुछ ऐसा डेफिनेशन चेंज कीजिए, ऐसा कुछ कीजिए कि जिस माध्यम से स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स को नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे एक अच्छी रिकग्निशन मिले। तो तुरंत उन्होंने वसुंधरा राजे जी बैठी थी नीचे, उनको कहा कि आप इनके साथ बैठ के समझ लीजिए। 3 साल तक उन्होंने बहुत सही मायने में देखा, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने एमएसएमई एक्ट लाया। और उस वक्त एमएसएमई एक्ट आने के बाद ऐसा हुआ कि 5 करोड़, 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ का टर्नओवर था, टर्नओवर बेस था रिकग्निशन। और 2019 में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने मुझे बुलाया, 3 घंटे देकर 3 घंटे में उन्होंने बहुत सारी बातें की, बहुत सारी बातें सुनी, रादर की नहीं, उन्होंने सुनी हम क्या चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि टर्नओवर तो बहुत कम है। तो उन्होंने पूछा टर्नओवर कम है, कितना चाहते हो। मैंने कहा देखिए कम से कम टाइनी माइक्रो को 5 करोड़ दीजिए, और स्मॉल को 75 करोड़ तक होना चाहिए, और ऐसे मीडियम साइज इंडस्ट्री को 250 करोड़, और एक ऐड कीजिए कि जो मिड कॉरपोरेट है 250 से लेके 1000 करोड़ तक, उनको हम एक डेफिनेशन या एक अच्छा संज्ञा दे सकते हैं कि जिससे नेशनल इंटरनेशनल में उनका कनेक्टिविटी बढ़े, इनका कोलैबोरेशन बढ़े। तो उन्होंने तुरंत पीयूष गोयल जी को बता के 6 फरवरी को हमारी मीटिंग हो गई। आई वॉज वन ऑफ द कमिटी मेंबर, एंड इमीडिएटली देखिए जून में नया एमएसएमई एक्ट आ गया, जिस माध्यम से हमारे एसएमई की क्रेडिबिलिटी बढ़ गई है। सो फ्रेंड्स, लेट अस गिव बिग हैंड टू दी डायनामिक लीडरशिप श्री नरेंद्र मोदी जी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आज अगर हमारे एसएमई सेक्टर बच गए हैं इस पैंडेमिक में, तो बिकॉज ऑफ द इमरजेंसी लोन। स्टेट बैंक के यहाँ कर मुंबई के चीफ बैठे यहाँ पर, आज बैंकों ने जो हेल्प किया उस वक्त, मुझे लगता है कि सही मायने में गवर्नमेंट, बैंकर्स एंड डॉक्टर्स, हमारे डॉक्टर निकम बैठे हैं, और देखा जाए तो इन तीनों ने, और सही मायने में देखा जाए एसएमई सेक्टर ने जो सप्लाई चेन में जो काम किया है, दवा के लिए पैकेजिंग का बॉक्स लगता है ना, तो कौन देगा, प्लास्टिक इंडस्ट्री ने दिया, पैकेजिंग इंडस्ट्री ने दिया, और वैल्यू एडिशन फूड प्रोडक्ट, फूड सप्लाई में किसने काम किया, तो हमारे एसएमई सेक्टर ने काम किया। तो आज अगर देखा जाए तो भारत की उन्नति करनी है तो एसएमई की बढ़ोतरी करनी है, एसएमई को एम्पावर करना, ये बहुत बड़ी बात। श्री नारायण राणे जी आ रहे, कुछ कारण से उनको थोड़ा लेट हो रहा है, लेकिन उन्होंने भी कहा, गए हफ्ते में उनसे मुलाकात, एसएमई सेक्टर के लिए मुझे सुझाव चाहिए, रिकमेंडेशन चाहिए आपसे, कि जिस माध्यम से हम इस सेक्टर को कैसे ट्रांसफॉर्म करें, इस माध्यम से हम किस प्रकार से उनको वैल्यू एडिशन सपोर्ट दें कि जिसके माध्यम से एसएमई सेक्टर की ग्रोथ बढ़े। तो आज के इस मौके पर गवर्नर साहब आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि आज हमारे एंटरप्रेन्योर्स खाली बिजनेस नहीं कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर रहे हैं, नए एंटरप्रेन्योरशिप ला रहे हैं, वर्ल्ड मार्केट में जा रहे हैं, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस दिखा रहे हैं। आज इंडिया कौन से पैमाने पर नहीं है बताइए, लेकिन इसमें काम करने का सही मायने में अगर हमारे यहाँ पर होता है तो एंटरप्रेन्योर्स का होता है। इसमें हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है, जैसे सूर्य दत्ता है, दालमिया इंस्टीट्यूट है, ये इंस्टीट्यूट भी बहुत बड़ा काम करेगी, जिस माध्यम से नई इंडिया की जो यूथ है, जिनको यूथ को लाने की जो काम कर रहे हैं उसका एक है। और आज मैं आपके हाथों से एक, और राणे साहब के प्रेजेंस में हम एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट काउंसिल सेटअप कर रहे हैं।
इस काउंसिल का माध्यम ये रहेगा कि स्टूडेंट्स को नए इंडस्ट्री के बारे में, नए बिजनेस के बारे में और स्टार्टअप्स, आज स्टार्टअप्स के माध्यम से मित्रों इतनी अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हुई है। वो खाली बड़ा स्टार्टअप नहीं, लेकिन हमारे एसएमई स्टार्टअप, एसएमई में बहुत सारे स्टार्टअप्स है जो आज जॉब करने के बाद 10-15 साल का तजुर्बा लेकर आज बिजनेस शुरू करते हैं। वो बहुत बड़े नॉलेजेबल पर्सन है। और आज जो एंटरप्रेन्योर्स बैठे, जो अवार्डीज है यहाँ पर, ये अवार्डीज भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे कि जिससे हमारे नए यूथ को, जो यूथ है जो चैलेंजेस फेस करता है मार्केट में जाने के बाद, कि उनको मार्केट की पता होता नहीं, फाइनेंस कैसा लिया जाता है पता नहीं है, प्रमोशन कैसे किया जाता है, इंटरनेशनल मार्केट में कैसे जाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो मित्रों, जो आज सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स है, इनका कंट्रीब्यूशन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप लेंगे तो आप हमसे जुड़ जाइए। आज हमारे नए यूथ को, नए भारत को बनाना है तो यूथ में हमारे एंटरप्रेन्योरशिप लानी पड़ेगी। क्योंकि पैंडेमिक में हमने देखा बहुत सारे लोगों ने कंपनियां बंद कर दी, बहुत सारे लोगों ने अपना जॉब वापस ले लिया और बहुत सारे लोगों ने जॉब छोड़ के नई बिजनेस भी शुरू की है। तो इस माध्यम से हमें, मुझे लगता है, सपोर्ट करना चाहिए। और इस आज के प्रोग्राम के लिए सुफिन, जो लार्सन एंड टुब्रो आज कम से कम 80 साल की कंपनी है, इन्होंने एक अच्छा इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म लाया, डिजिटल प्लेटफॉर्म लाया, जिस माध्यम से सप्लाई चेन मैनेजमेंट ईजी हो सकता है। और गति नाम की जो लॉजिस्टिक कंपनी है, इन्होंने हमें गति शक्ति देने का एक काम किया है कि जो इंडिया की जो लॉजिस्टिक पॉलिसी आज अपने प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया है, इसको एक अच्छा मॉडर्न देने का, एक अच्छा रूप देने का काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे स्टेट बैंक है, सभी बैंक है, गवर्नमेंट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज का दिन जो हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं, ये हमारे एंटरप्रेन्योर्स का एक सम्मान कर रहे हैं। इस सम्मान के माध्यम से हमें चाहते हैं कि इनकी प्रगति हो और भारत देश की प्रगति हो। आज $5 ट्रिलियन इकोनॉमी अगर हमें अचीव करनी है तो कौन करेगा? यही करने वाले हैं। तो मुझे लगता है इन्हीं को अगर हम सराहना करेंगे, इनको अगर अच्छा लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे, तो मुझे लगता है इंडिया पीछे नहीं रहेगा। इंडिया विल बी द नंबर 1 इन फ्यू ईयर्स। एंड ऑफ कोर्स मैन्युफैक्चरिंग हम बनाने के लिए आज बहुत डिफिकल्टी आती है। मैंने जैसे अभी इंडस्ट्रियल पार्क के बारे में बात करता हूँ, लैंड लेने के लिए बहुत दिक्कत आती है, कंस्ट्रक्शन करने के लिए दिक्कत आती है। मुंबई में पहले तो गुंडों का राज था। मैंने 1999 में बहुत सारा इनिशिएटिव लेके हमने गली के गुंडे निकाल दिए। बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन जो वो भी करा लिया। लाइसेंसेस भी इतने लगते थे कि पूछो मत, कि बिजनेस करे कि लाइसेंस का ध्यान दे या इंस्पेक्टर राज को ध्यान दे, वो भी हमने कम कराया। तो मित्रों, अभी सही मायने में देखा जाए तो हमें अच्छे दिन आए हैं। तो इस अच्छे दिन का फायदा कैसे लेना है हमें देखना है। क्योंकि एसएमई सेक्टर में अगर एक फैक्ट्री की 2 फैक्ट्री 3 फैक्ट्री होती है, तो मुझे लगता है हमारे एंटरप्रेन्योर्स अच्छा काम करें, उनकी सराहना करनी चाहिए। अब प्रभाकर सालुंके जी इधर बैठे हैं, इनको मैं 1993-94 से जानता हूँ। 1 लाख का टर्नओवर था, आज 2000 करोड़ का टर्नओवर है। और कम से कम मुझे लगता है 20,000 लोग उनके पास काम कर रहे हैं। तो ऐसे जो हमारे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, इनका एक अच्छा एक रोल मॉडल लेकर हम चलेंगे, तो मुझे लगता है कि इसका अच्छा हम लोग एक काम कर सकते हैं, नया एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट कर सकते हैं। संजय चौरड़े जी बैठे, आज कितने नए स्टूडेंट्स को, अच्छे स्टूडेंट को नई सुविधा देते हैं। बैंकिंग फाइनेंस चाहिए, बैंकिंग फाइनेंस भी मिला के देते। कारण यह है कि आज कोई भी स्टूडेंट बाहर आता है तो जॉब की तरफ पीछे जाए, लेकिन जॉब में एक्सपीरियंस लेके वापस अपना खुद का बिजनेस शुरू करे, ये हमारी इच्छा है। और ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट काउंसिल की जिम्मेदारी मैं उन्हीं को दे चुका हूँ कि जिस माध्यम से साल का कम से कम 5 लाख एंटरप्रेन्योर हमें खड़ा करना है। और बैंकों का महत्व है, बैंकों का काम है। और हमारे एंटरप्रेन्योर सप्लाई चेन में आज हमारे पाठक जी बैठे, सुफिन के, एल&टी के, आज बैंकिंग सेक्टर में उनका जो अनुभव है, उस माध्यम से आज सप्लाई चेन में वो काम कर रहे हैं। तो हमारी एसएमई कहाँ फंसती है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। कहाँ फंसती है? आइडेंटिफाइंग द बायर एंड सप्लायर। तो मुझे लगता है कि आज का ये मौका है, अच्छा है, इसका फ़ायदा लेना चाहिए। और मैं गवर्नर साहब का शुक्रिया करता हूँ कि आपने आपका कीमती वक्त देकर हमें, हमारे एंटरप्रेन्योर्स को एक एनकरेजमेंट, एक अच्छा नॉलेज देने का और अच्छा सपोर्ट देने का काम किया। और मैं चाहता हूं कि आपकी गवर्नमेंट, मतलब महाराष्ट्र की गवर्नमेंट भी हमारे एसएमई सेक्टर के और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बहुत सारे इश्यूज है, वो उस पर ध्यान दे। आज हमने चीफ मिनिस्टर साहब को भी बुलाया था, इंडस्ट्री मिनिस्टर को बुलाया था, लेकिन आज सेशन आज का एक दिन बढ़ गया करके उन्होंने कहा कि नेक्स्ट प्रोग्राम में हम लोग रहेंगे। और ताज्जुब की बात है कि आज मुंबई में कोई हॉल ही नहीं था, हमने एक छोटा हॉल ले लिया। तो अगले टाइम आप आएंगे तो हमारे 5,000 कम से कम लोग एंटरप्रेन्योर्स बैठे रहेंगे। तो फ्रेंड्स,
On behalf of SME Chamber of India and Maharashtra Industry Development Association, I welcome you again, and I'm thankful to Governor Saab and his team for providing the support. Thank you very much. Ladies and gentlemen, a big, big round of applause for Shri Chandrakant Salunke ji. Well, for all our international guests sitting out here, he did acknowledge a few entrepreneurs who have done incredible business within India, and of course is encouraging the government of Maharashtra to look into certain concerns and of course certain proposals. Let's give him a big round of applause for his vision. He keeps always pushing ahead. A bigger round of applause, ladies and gentlemen. On that note, it is now my honor to call upon the Head Corporate Strategy and Special Initiatives, Larsen & Toubro Limited, Shri Anup Sahai, to deliver a speech. Let's give our guest a big round of applause. Thank you. Honorable Governor of Maharashtra, Shri Ramesh Bais, Shri Chandrakant Salunke, President of SME Chamber of India, other esteemed guests over here, ladies and gentlemen. I would like to thank Shri Chandrakant Salunke for inviting me to this summit. This is a great opportunity for me to address all of you on behalf of L&T. Thanks very much, Mr. Salunke, for setting the context. And we have heard right through the morning about the kind of problems being faced by SMEs. And also, we have also listened about some of the solutions that can be implemented by SMEs themselves and also by policymakers and others. There were suggestions towards that also. So in line with this theme, I would also like to share how we look at some of the problems facing SMEs in the country, and how when we discuss these things in L&T, because for L&T, SMEs are a critical part of our supply chain. We use something like 4,000 to 5,000 active SMEs at any point of time for supplying us various construction and industrial products. So how we see their problems and what could be the possible solutions. Some of it we have tried to implement through the L&T Sufin e-commerce platform, about which Mr. Salunke just now also mentioned, and we have been saying since morning. Mr. Bhadresh Pathak, the head of the business, he presented on what this platform is all about. So I will, as a consequence of setting up this business, we did a lot of thinking as to what all is the in sector and what more can be done. But before I come to that, just want to acknowledge that yes, the MSME sector or industry plays a crucial role in development of the economy. There are over 63 million such MSMEs, including the micro part, which employs more than 110 million persons. And within this, the SME sector itself has become a critical growth engine for the economy, and its output contributes 36% to the all India manufacturing value added, and it also accounts for close to 50% of the exports of India. We must also acknowledge the efforts taken by the government of India already to see how to support these SMEs, particularly in the line of making available to them credit and financing through emergency credit line guarantee scheme, credit guarantee trust for micro and small enterprises, and also interlinking portals like Udyam eShram National Carrier Service and Atmanirbhar Skilled Employer Mapping System to support the SMEs for their skill development and employment. We have seen a significant growth in loan disbursements to MSME enterprises, a growth of 24% year on year. So it's not that things are not happening. There is progress being made in providing finance, and there is inclusivity increasing year by year. However, as discussed in the morning also, a large number of SMEs that are small and are not yet in the formal sector, they are not able to access the formal sector's lines of finance, which are at a more affordable rate. So therefore, there is a lot that yet has to be done despite all the steps being taken. So just to look at a few more issues which are facing the SMEs, they find it difficult to reach out to wider markets, mainly due to lack of knowledge of customers in distant locations, and therefore the lack of also resources and facilities, mainly in terms of logistics, to reach out to such markets and customers who are not located in their immediate catchment area. For SMEs, especially in the manufacturing sector, the procurement of good quality raw materials and inputs from reliable sources and suppliers also pose challenges.
We discussed about the financial aspect as to how they find it difficult to source loans, particularly small size of loans and lack of transparency and awareness of funding sources. Mr. Salunke, today morning, he asked as to how many of you are aware of the various kinds of financing schemes already available, and the awareness itself was rather limited. And in addition to awareness, the quantum of loans provided is also not sufficient to sometimes meet even the working capital requirements. A lot of it is to do with the digital technology and digitization of SMEs, which also was mentioned in the morning. Mr. Salunke himself said again and again that there's a need to digitize, because if SMEs digitize, then they can tap into the increasing digitalization of financing, digitization of buying and selling, digitization of logistics, etc. So there's a big challenge on that, and this is something which needs to be taken on. While digitalization is one such area, and there's a lot of benefit to SMEs, and it has progressed, but the adoption is still very low. Then there are, however, e-commerce platforms which have come on stream, including the government-promoted ONDC, and there are some also from private entities. So there's a need to tap into such buyer-seller networks, which can also help in the digitization of the SMEs. One solution is to, particularly if I think of the financing side, e-commerce platforms who are connected to banks, like L&T Sufin is, and there are others also who are trying to do the same. E-commerce platforms focused on manufacturing who are connected to banks, they can provide the bridge between SMEs on the one side and banks and NBFCs on the other side. An important role in this can also be played in terms of facilitation by the respective industry associations to which the SMEs belong to. So industry associations, in collaboration with e-commerce platforms who have the financing connections, they can make a big difference to the SME sector. I will just repeat for emphasis as to what L&T Sufin has tried to do with the launch of its B2B e-commerce platform. So this is a platform for sourcing and selling construction and industrial products in over 50 categories, and with over 3 lakh specific products across these 50 categories. Already more than 30,000 suppliers, all from the SME areas, they have registered on this platform, and transactions have begun earlier last calendar year. So there is progress being made, and this is an opportunity for all SMEs, I would urge, who are present in the B2B space for industrial and construction products to take advantage of this platform. I now come to the last part of my address, where there is a few more suggestions on how SMEs can be supported. The government has announced production-linked incentives, or more popularly known as PLI incentive schemes, across 14 sectors comprising electronics, automobiles, automotive components, ACC batteries, solar, etc. While the PLI schemes are for large corporates, a part of the incentives can be linked to the extent of sourcing being done from SMEs for components and subcomponents. All these, the corporates which are sort of availing of the PLI scheme and are setting up factories, they would not be producing everything themselves. For many of the components, they would be resorting to outsourcing it from smaller manufacturers. And to the extent that these are coming from SMEs, this can be considered as a basis on which give the incentives out to the corporates. This can also help the SMEs to better integrate into the more priority sectors which has been defined by the government as far as manufacturing is concerned, and such integration with larger companies as part of their supply chain, which will help the SMEs in also upgrade their technology and manufacturing facilities and operations, and make them a part of the global value chain wherever such industries are focused on exports. Another important subject nowadays is climate change. It is important for SMEs to assess the impact of their business on environment, especially for those in manufacturing. They need to adopt sustainable business practices such as materials recycling and reuse, improve energy efficiency, improve the efficiency in terms of usage of water so that water resources are conserved. We are getting more and more into periods, and more parts of the country are coming in under what is certified as water-stressed areas. So all such measures need to be taken by everyone, including the SMEs involved in manufacturing. These are required for building business resilience, and also
they have a greater impact on SMEs and large corporates because it is becoming more and more a regulatory requirement. Investors are also asking as to whether you are taking care of the environment or not before disbursing larger amounts. And we are seeing a trend where the interest rates could be higher for loans where the entity is having some kind of an environment impact which is not desirable. The SEBI has come out with the new regulations and they're asking all large-sized companies to look at their supply chains. Who are their suppliers? Are their suppliers also reducing their impact and carbon footprint on the environment? And these companies have to give a status of how they have assessed and tracked their suppliers and certifying that, yes, the environment care is being taken by their supply chain. So this is going to come from FY 23-24. From the current financial year, it's going to be mandatory now to report such kind of things. So it is better to be prepared in advance, and SMEs who take care of the environment aspect will certainly be preferred supplier to their larger companies. In conclusion, as we aim to become a 5 trillion economy by 2026, we will require SMEs to play a pivotal role in our country's economy development. This sector has shown tremendous resilience in the face of recent pandemic and has been instrumental in speeding up economic recovery. Industry associations, policymakers, fintech companies, e-commerce platforms, banks, and large corporates need to come together to provide adequate support to SMEs to maximize their potential and ensure India's growth to 5 trillion and beyond. More importantly, growth through SMEs is more equitable, and the wealth created by SMEs spreads to a larger part of society. L&T is known for its nation building, and we consider SMEs to be very much a part of this nation building activity, and we engage them to a great extent in this purpose. And as far as we are concerned, the support for SMEs will continue, both from L&T and particularly from L&T SUFIN. Thank you. With a legacy of over 80 years, and we've got a great platform now launched for all of you. I think let's give him a big, big round of applause, Shri Anup Saiji, for joining us. Well, ladies and gentlemen, India as an emerging country, Honorable Prime Minister is putting his best efforts to make India a manufacturing hub of the world, has given a task to every entrepreneur to put in efforts and achieve the $5 trillion economy. Hence, the SME sector is playing a very vital role and are contributing their part for India's growth. The SME Chamber of India has been recognizing the successful entrepreneurs, enterprises, institutions, corporates, and individuals for their outstanding contributions and remarkable achievements for the last 21 years. India SME Excellence Award is a unique recognition for the winners, not only on the domestic level, but also highlighting their success stories at the national and international level. This activity is showcasing the caliber of the entrepreneurs, their leadership qualities, decision-making power during the uncertain time, accepting the challenges to compete not only with the local but global markets, as well as putting more efforts at every moment to transform their business for better growth, employment generation, export promotion, and most importantly, encouraging new entrepreneurship and providing unique opportunities to make unskilled to skilled labor force. Today, we'll also be felicitating 3 dignitaries by presenting the Pride of Maharashtra Awards. Once again, can we have a big round of applause for all of you out here? And on this humble note, I would now be starting with the awards. We'd request our Honorable Governor, along with our dignitaries, to now step forward as we'll be starting with the awards. So ladies and gentlemen, it is now a proud and privilege of SME Chamber of India to present the 22nd edition of the India SME Excellence Awards, recognizing rising SMEs of India. These awards have been supported and powered by L&T SUFIN, as well as partnered by Gati to provide more Shakti for enhancement for the efficiencies in their business activities. To begin with the awards, we'd like to recognize
very successful young entrepreneur who has taken the baton of a family-owned business for further growth. Ladies and gentlemen, as the stage is getting set, it is now time for us to start with the awards. The Young Entrepreneur of the Year Award for the manufacturing sector. And ladies and gentlemen, that goes to Mr. Arpit Sitpura, the Director, Max Steel Wire Health Private Limited, Vadodara, Gujarat. Let's give him a big, big round of applause. Their main business activity, manufacturer of textile machinery parts and accessories, turnover of the company, rupees 73 crores. And we, of course, have Arpit on the stage with us. Thank you so much and congratulations. The Best SME Exporter of the Year award goes to Val Organics Private Limited, Mumbai, Maharashtra. Could I have Mr. Lalit Chadha, Managing Director, and Mr. Vivek Chadha, Technical Director, to kindly join us. The turnover of the company, 243 crores, of the main business activity, manufacturer organic intermediates. The Best SME of the Year award, manufacturing sector, and ladies and gentlemen, that goes to Daffodil Group, Ahmedabad, Gujarat. May I request Jitendra R. Patel, Managing Director, and Mr. Kushal Patel, CEO, to kindly join us. Ladies and gentlemen, we're talking about the turnover of the company being 248 crores, and the main business activity being manufacturer of the API and the food additives. Ladies and gentlemen, next up for the Best Mid-Size Enterprise of the Year award, and that goes to Ediflex Industries Limited, Navi Mumbai, Maharashtra. May I invite Mr. Yusuf Kagzi, the founder, and Tasneem Kagzi to kindly join us. We're talking about a company with a turnover of 240 crores and the main business activity, manufacturers of the stainless steel flexible hoses and assemblies. Next up, the Innovative SME of the Year Award, Innovation and Inventions. And that goes to Jeevan Chemicals Private Limited, Mumbai. May I request Mr. Sonal Shah, Managing Director, and Mrs. Ashita Shah, Director, to kindly join us. With a turnover of the company of 100 crores, their main business activity is manufacturer of specialty chemicals. Next up for the Best Enterprise of the Year Award, Innovation and Inventions, and that goes to Al Aziz Plastics Private Limited, Mumbai, Maharashtra. May I invite Mr. Uday Adhikari, Managing Director, and Mr. Sagar Adhikari, the Director, to kindly join us. With a turnover of the company at 76.49 crores, the main business activities, manufacturer and exporter in plastics fittings. Congratulations. With that, it is now time for the Global SME of the Year Award, Logistics Sector. Ladies and gentlemen, that goes to Rishabh Sealing and Logistics Private Limited, Mumbai. May I invite Mr. Pankaj Mehta, Chairman, and Mr. Vishal Mehta, CEO, to kindly join us. The turnover of the company at rupees 356 crores. The main business activities, logistics, freight forwarding, and transportation. Congratulations. With that, it is time for the Best SME of the Year, Manufacturing Sector, and that goes to Mascot Systems Private Limited, Navi Mumbai, Maharashtra. May I request Mr. T.R. Vardhan, Director, and Mr. N. Yoganand to kindly join us. We're talking about the turnover of the company being 22 crores and the main business activity being the manufacturer and exporter of organic products. Let the applause continue, ladies and gentlemen. Next up for the Best Family Business of the Year Award for Manufacturing Sector, and that goes to Shanti Chemical Works, Ahmedabad, Gujarat. With a turnover of the company being 68 crores, we're talking about the manufacturers of the organic chemical. We have with us Varun Patel and Mr. Gaurav Patel, who are partners. Let's give them both a big round of applause. Next up for the Emerging SME of the Year Service Sector, and that goes to Technogreen Air Conditioning Private Limited, Bangalore, Karnataka. May I invite Mr. D.L. Narasimha, the Chairman and Managing Director, to kindly join us. The turnover of the company is 67 crores. The main business activity being HVAC contractor and service provider.
Next up, for the Best Enterprise of the Year, IT Sector, and that goes to Orient Pro Solutions Limited, Navi Mumbai, Maharashtra. May I invite Sneha Pandit, the Vice President, to kindly join us with a turnover of the company at 289 crores. The main business activity is software and IT services. Ladies and gentlemen, now for the Women Entrepreneur of the Year Award, Manufacturing Sector, and that goes to Ms. Khushbu Chandrakant Doshi, the Director of Raju Engineers Limited, Rajkot, Gujarat, with a turnover of the company at rupees 165 crores. They are the manufacturers of plastics extrusion machinery. Let's give them a big round of applause. Next up for the Women Entrepreneur of the Year Award, Service Sector, and that goes to Ms. Vijayata Kariya Subhagna, Director of Rishabh Sealing and Logistics Private Limited, Mumbai, with a turnover of the company being 356 crores. We're looking at the main business activity being logistics, freight forwarding, and transportation. Next up, for the Startup Company of the Year, it is TLI TradeLink India General Trading LLP, Mumbai, Maharashtra. May I request Mr. Abhishek Wadekar, Founder, Chairman, and Mrs. Yogita Wadekar, Co-Founder, to kindly join us. The turnover of the company is 22.23 crores. Let's give them a big round of applause. Joining us next for the award, Emerging SME of the Year, Manufacturing Sector, and that goes to Core Life Whole Foods Private Limited, Pune, Maharashtra. May I request Mr. Girish Kumbar, Managing Director, to kindly join us, with the turnover of the company being 22 crores, the main business activity manufacturer and exporter of organic products. Next up, for the Best Financial Institution of the Year Award, and that goes to State Bank of India. Mr. G.S. Rana, Chief General Manager, Mumbai Circle, joining us, with their business activity being banking services for empowering SMEs. Let the applause continue, ladies and gentlemen. And with that, we're also presenting the Pride of Maharashtra Awards to 3 dignitaries of the year 2022, which is initiated by the Maharashtra Industry Development Association and the SME Chamber of India. The Lifetime Achievement Award for Service Sector goes to Shri Prabhakar Salunke, the Founder and Chairman, Sumit Facilities Limited, Pune, Maharashtra. Completed 31 years in the first generation entrepreneur, the group turnover of the company is more than 2,000 crores and provides job opportunities to thousands of people from unskilled and skilled. We have Mr. and Mrs. Salunke on the stage who have come to receive the award. With that, ladies and gentlemen, it is now time for us for the Best Institution of the Year Award, Education Sector. Hold your breath, and that goes to NL Dalmia Institute of Management Studies and Research, Mumbai. May I request Dr. Seema Saini, who's the CEO, to kindly join us. The turnover of the company stands at 30 crores. The special efforts of this institute is to generate new entrepreneurship, startups, and various extracurricular activities. Let's give them a big round of applause. Next up, for the Appreciation Award, Education Sector. Ladies and gentlemen, that goes to Suryadatta Women Entrepreneurship and Leadership Academy, Pune, for the exemplary contribution towards social entrepreneurship for self-reliant India. We're joined by Srimati Sushma Chodhya, who's the founder. Let's give them a big round of applause. Special efforts of this institute to generate new entrepreneurship, startups, and various extracurricular activities. Come on, ladies and gentlemen, a big round of applause needs to continue. We come to the end of the awards, but we have the release of the activity report of the SME Chamber of India for the year 2022. In the presence of our Honorable Governor and our dignitaries, it is time to now release the activity report of the SME Chamber of India for the year 2022. Come on, ladies and gentlemen, let the applause continue. It needs to roll. We're talking about the activity report of the SME Chamber of India for the year 2022 being launched
by none other than the Honorable Governor. Let's give them a mighty, mighty round of applause. As the activity report being circulated on the stage with our dignitaries, I believe that deserves a bigger round of applause. And also, we'd like to now launch the Entrepreneurship Development Council, which is the initiative of the SME Chamber of India and SME Business Management Institute. Let's give them a big round of applause as our dignitaries now launch the Entrepreneurship Development Council in the humble presence of our Honorable Governor and our dignitaries on the stage. The Council will put efforts to encourage new entrepreneurship in association with the various stakeholders, especially the educational institutes, to set up entrepreneurship development cell, to provide value addition services, to set up new businesses, to be the prospective startups and involve their family businesses. Let's give them a big round of applause. And of course, now comes the moment we've been all waiting for. It is now time for our Honorable Governor to now join us on the stage for his address. Can we have a big round of applause? एसएमई चैम्बर के 30वें स्थापना दिवस के अवसर पर मंच पर आसीन श्री चंद्रकांत सालुखे, अध्यक्ष एसएमई चैम्बर ऑफ इंडिया और महाराष्ट्र इंडस्ट्री डेवलपमेंट एसोसिएशन, श्री अनूप सहाय, हेड कॉरपोरेट स्ट्रेटेजी लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड, यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभाव, पुरस्कार विजेता और उद्यमी मित्र, एसएमई चैम्बर ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित चैम्बर का 30वां स्थापना दिवस समारोह, इंडिया एसएमई लीडरशिप समिट और 22वें एसएमई एक्सीलेंस पुरस्कार समारोह में आप सबके मध्य में उपस्थित होकर बहुत आनंद अनुभव कर रहा हूं। एसएमई चैम्बर ऑफ इंडिया छोटे और मध्यम उद्यमियों को एक मंच प्रदान करने वाला भारत का अग्रणी संगठन बनकर उभरा है। मैं चैम्बर के संस्थापक और अध्यक्ष श्री चंद्रकांत सालुखे जी के प्रयासों की सराहना करता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। एसएमई एक्सीलेंस पुरस्कार विजेताओं का मैं विशेष रूप से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। महाराष्ट्र राज्य देश के औद्योगिक विकास का इंजन जाना जाता है। हमारे राज्य की प्रगतिशील और मैत्रीपूर्ण औद्योगिक नीतियों के निवेश को प्रोत्साहित किया है और एसएमई क्षेत्र के विकास के अवसर प्रदान किए हैं। राज्य सरकार हमारे उद्यमियों के लिए एक सहायक वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और सरकार ने नवाचार, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की है। हमारा उद्देश्य एक ऐसा परिस्थिति तंत्र बनाना है जो व्यवसायों के विकास के लिए अनुकूल हो और महाराष्ट्र को निवेश के लिए सबसे पसंदीदा राज्य बना सके। हमारे एसएमई हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और आत्मनिर्भर भारत के चालक रहे हैं। देश के आर्थिक विकास में एसएमई के योगदान को दुनिया भर में मान्यता प्राप्त है। भारत में ये उद्यम विनिर्माण उत्पादन का लगभग 45%, औद्योगिक इकाइयों की संख्या का 95% और निर्यात का 40% हिस्सा है। इसके अलावा यह क्षेत्र लगभग 60 मिलियन से ज़्यादा लोगों को रोजगार प्रदान करता है, जो इसे कृषि क्षेत्र के बाद रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत बनाता है। भारत के कमजोर वर्ग और दूर दराज वाले क्षेत्रों से अनेक लोग तथा बड़ी संख्या में महिला कर्मचारी एमएसएमई में कार्य कर रहे हैं। यह इस क्षेत्र को समावेशी विकास के राष्ट्रीय प्रयास में एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करता है। एमएसएमई का एक अन्य पहलू यह है कि उनमें से 54% ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। इसलिए इस क्षेत्र में स्थानीय कच्चे माल, स्थानीय कौशल का उपयोग करके और जहां वे रहते हैं लोगों को रोजगार प्रदान करके
ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधि उत्पन्न करने की क्षमता है। हमारे देश में ग्रामीण समृद्धि लाने के संबंध में एमएसएमई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस क्षेत्र के सतत और मजबूत विकास के लिए प्रौद्योगिकी, विपणन, ऋण और कौशल विकास प्रमुख क्षेत्र होने चाहिए। महाराष्ट्र में एसएमई के विकास को चलाने वाले प्रमुख कारकों में से एक प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार पर जोर देना है। हमारे एसएमई को तकनीकी प्रगति को अपनाना चाहिए और आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए अनुभव दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। अनुसंधान और विकास R&D नवाचार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण है और महाराष्ट्र सरकार ने एसएमई के क्षेत्र में R&D को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए हैं। मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत में एसएमई क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारे एसएमई हमारे देश के निर्यात, डीजीपी और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। एमएसएमई मंत्रालय हमारे एसएमई के लिए सक्षम वातावरण बनाने में सहायक रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र की जबरदस्त वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल ने हमारे एसएमई को अधिक आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया है और उन्हें आयात पर अपनी निर्भरता को कम करने में मदद की है। इस पहल से हमारे एसएमई क्षेत्र के निर्यात में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद मिली है। यह वास्तव है कि एसएमई को कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें वित्त तक पहुंच, प्रौद्योगिकी तक पहुंच और बाजारों तक पहुंच शामिल है। हम इन चुनौतियों का सामना करने और राज्य में एसएमई क्षेत्र के विकास को सपोर्ट करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एक बार फिर एसएमई एक्सीलेंस अवार्ड के सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई देता हूं और सभी एमएसएमई उद्यमियों को उनके भविष्य के प्रयासों में सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं। एसएमई क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने में एसएमई चैम्बर ऑफ इंडिया द्वारा किए जा रहे प्रयास के लिए मैं चैम्बर को हार्दिक बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। Ladies and gentlemen, a big round of applause. And yes, that deserves a standing ovation. Our Honorable Governor, Shri Ramesh Bais ji, and now I request Shri Salunke ji for the vote of thanks and closing remarks. माहिम साहब, धन्यवाद। आपके जो एड्रेस से हमें एक अच्छी एनकरेजमेंट मिली है, जिस माध्यम से चैम्बर के माध्यम से और हमारे एंटरप्रेन्योर्स के सहयोग से मुझे लगता है आने वाले बहुत सालों तक हम इसको कंटिन्यूटी रखेंगे एंड विल डेफिनेटली ट्राई टू टू एनकरेज मोर एंटरप्रेन्योरशिप एंड वी विल सपोर्ट आवर एंटरप्रेन्योर्स पर्टिकुलरली टू पुट एफर्ट्स to achieve the target growth, and of course we have to complete the dream project of Honorable Prime Minister. So let us give a big hand to the Honorable Prime Minister's vision, which which will be useful. आजकल हमें लगता है कि सही मायने में देश में उन्नति बढ़ रही है और इस माध्यम से मुझे लगता है कि इसका फायदा लेना चाहिए। आई एम थैंकफुल टू दी Sufin, L&T Sufin for providing the support for this event, and special Gati, State Bank of India, all entrepreneurs, those are sitting here, and especially the award winners. I congratulate on behalf of SME Chamber of India. अभी सिर्फ ये फोटो अपॉर्चुनिटी, आपकी जिम्मेदारी बड़ी है। अब आपको काम करना है सही मायने से। जिन्होंने अच्छा काम किया है और बढ़ना चाहिए। गवर्नर साहब जब ये फॉर्म भरते हैं ना, तब उनको पता चलता है कि मैंने क्या किया, और फॉर्म भरते समय उन्हें पता चलता है मैंने क्या नहीं किया। तो ये एक लाइन ऑफ एक्शन है कि हमारे एंटरप्रेन्योर्स को किस प्रकार बढ़ना चाहिए।
और यही रोल मॉडल आप बनोगे। और मुझे लगता है जैसे अंकित आज बड़ौदा में बहुत अच्छी तरह काम कर रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे अच्छी तरह कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है, ऐसे यंग एंटरप्रेन्योर्स को हमें सपोर्ट करना है, यंग एंटरप्रेन्योर आगे बढ़ाना है। मिस्टर शाह भी आज इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, जितू भाई आप यू आर डूइंग, प्रभाकर सालुंके तो ऑलवेज ही इज द फोर फ्रंट। आज जो अनस्किल को स्किल करने का काम हमारे प्रभाकर सालुंके जी ने किया। हमारा सरनेम सेम है लेकिन हमारे अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आज हमने जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट काउंसिल का जो सेटअप किया है, अदर एसएमई बिजनेस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के माध्यम से हम कर ही रहे, लेकिन मैं चाहता हूं कि कौन कौन एंटरप्रेन्योर्स इसमें अभी इन्वॉल्व होना चाहते हैं, कैसा कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं। तो अगले साल गवर्नर साहब को मैं दे सकता हूं कि देखिए आपने ये लॉन्च किया, इसमें हमारे जो सहयोगी एंटरप्रेन्योर्स हैं इन्होंने ये काम किया। तो मुझे लगता है अगला रिपोर्ट इससे बड़ा होना चाहिए, ये ख्वाहिश रख के मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। श्री राणे साहब भी रीचिंग 2 minutes बिकॉज ऑफ सम इम्पॉर्टेंट वर्क ही कुडंट मेक इट। तो आप कहीं उठिए मत, यहीं बैठे रहिए, एक 10 मिनट में आ रहे हैं, हम लोग एक फ़ोटो लेंगे उनके साथ में, सभी के साथ में इंटरेक्शन होगा और मुझे लगता है कि ये प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। Thank you so much. Thank you. Before that, before the group photograph, we'll just request you all to stand up for the national anthem and then we can have a group photograph with all the awardees. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्सव जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Good afternoon, everyone. First of all, I would like to congratulate all of you, all the award winners, and all those who are present over here as a SME Chamber member or the entrepreneurs for receiving a very, very coveted and prestigious award at the hands of the Governor of Maharashtra. And I must also congratulate the entire SME Chamber of India Mumbai team. I am also part of SME Chamber for the rest of the Maharashtra. We are based in Pune. Now, today we have already inaugurated entrepreneurship cell, mainly for the students who are pursuing their graduation or post-graduation from any stream, maybe it is a commerce, science, engineering, pharmaceuticals, architecture, or any service sector discipline. As you are all aware, the new education policy has been announced in the year 2020. And in the phased manner, we are in the process of implementing the same, where the freedom is given to the students to select the specialization of his choice. There are opportunity for interdisciplinary branches changing and also multidisciplinary. So with this, students can learn education what he wants. Maybe after a year or so, he feel that he wants to change his branch or a specialization. He need to complete his required credit of that particular previous year, and then he will be transferred or he can transfer the course in the next suitable branch. Why this flexibility has been given to the students? Basically he should pursue the education what he likes, in which he has a passion and in which there are multiple opportunities. All of you are aware, earlier we were talking about the change. During our times, the change is constant. We must envisage change, we must practice change, we must adopt change. But now it is no more only change, it is innovative and dynamic change. Rather, I can say every day, every minute, every month, every year, depending upon the products, its manufacturing cycle time, its application, and need of the hour due to the global developments, what we have experienced during the pandemic. So situation-based developments, innovation-based developments, lifestyle-based developments, and therefore larger opportunities, at the same time lot of uncertainties for the students in their minds,
because the life of any business is now varying. Earlier there was a time, once you develop any product, launch, start manufacturing the product, and it remains for decades. Now it's no more the time. We have among us a very, very renowned, our Honorable Minister of Small MSME Sector, Honorable Narayan Raneji. Please welcome him with a big round of applause. Welcome, sir, to SME Chamber of India. Thank you so much. Okay. Sir, we were discussing about the launching of Innovation and Entrepreneurship Council of SME Chamber of India across the Maharashtra. Sir, wherein all the educational institutions, to start with Suryadatta Group of Institutions and Dalmia Institutions, and the young entrepreneurs and SME Chamber of India members, all small and medium scale industry professionals, they are going to support, and we will encourage the student right at their graduation level and the post-graduation level to start their own venture, new business, and therefore the entire required support of ecosystem will be given to them. सर्व लोकांना आपण मुलांना त्यांचे इंजिनिअरिंग करत असताना, मॅनेजमेंटचं एज्युकेशन करत असताना, वेगवेगळ्या क्षेत्रातील ग्रॅज्युएशन करत असताना, we have to sow the seeds of becoming an entrepreneur. Instead of job seeker, they should be job givers. आणि यामध्ये आपल्याला MSMEचा फार मोठा रोल आहे. नारायण राणे साहेब हे महाराष्ट्राचे मोठे नेते आहेत आणि आता केंद्रीय स्तरावर गेलेले आहेत. त्यांचा सपोर्ट आपल्याला निश्चितच राहणार आहेत. याबद्दलची सविस्तर भूमिका आपले ऑनररी प्रेसिडेंट चंद्रकांत साळुंकेजी मांडतीलच, पण मला खात्री आहे, विश्वास आहे की जर सर्वांचा सपोर्ट असेल तर भारताचं जे काय 5 ट्रिलियन टार्गेटचं स्वप्न आहे ते निश्चितच पूर्ण होईल. आता जेवढ्या पण मोठ्या इंडस्ट्रीज आहेत त्या आधी अशाच स्टार्टअप प्लग अँड प्ले मधून सुरू झालेल्या आहेत. फक्त पुण्यातील, महाराष्ट्रातील, भारतातील नाही तर विश्वातील अशा सगळ्या युनिव्हर्सिटीज, इंडस्ट्री ज्या मोठ्या लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, मल्टीनॅशनल कंपनी ज्या फॉर्म झालेल्या आहेत त्या सुरुवातीला स्टार्टअप सेलमधूनच सुरुवात झालेल्या आहेत. तिथून नंतर SME झालेल्या आहेत, नंतर MSME झालेल्या आहेत, लार्ज स्केल इंडस्ट्री झालेल्या आहेत, फक्त भारतामध्ये किंवा त्यांच्या देशामध्ये राहिलेल्या आहेत आणि नंतर त्यांचं सर्व जगभरामध्ये त्यांचा एक्सपॅन्शन झालेलं आहे. तर ही अपॉर्च्युनिटी क्रिएट करण्याचं काम आपल्या सर्वांचं आहे. पूर्वी हे आपण ग्रॅज्युएशन, पोस्ट ग्रॅज्युएशन झाल्यानंतर नोकरी करून 2, 3, 4, 5 वर्षांनी हे ठरवत होतो. आता हे शाळेय लेवलपासून ते हायर सेकंडरी लेवलपासून ते अंडर ग्रॅज्युएट लेवलपासून ते पोस्ट ग्रॅज्युएशन लेवलमध्येच मुलांमध्ये एंटरप्रेन्योरशिपचं बीज रोवण्याचं काम आपल्याला सर्वांना करायचं आहे. सो वी विल नीड सपोर्ट ऑफ ऑल दोज हू हॅव बिकम अन एंटरप्रेन्योर अँड ऑल दोज इन्स्टिट्यूशन्स. वी नीड अ मेंटॉर फ्रॉम पीपल लाईक यू टू पॅशनेटली शेअर युअर एक्सपिरियन्स, द बँकर्स टू सपोर्ट द इकोसिस्टम, all the mentors to give the guidelines to the students, so thereby the sowing of the seed of starting their own venture will start at the right age. आणि आपण बघितलंय मुलांना की जे पूर्वी आपण ग्रॅज्युएशन झाल्यानंतर पोस्ट ग्रॅज्युएशन मध्ये असताना रोबोकॉन करायचो किंवा हॅकॅथॉन करायचो, ते आता शाळेतील मुलं करायला लागलेली आहेत. बिकॉज द एक्सपोजर इज सो ह्यूज ड्यू टू द इन्फॉर्मेशन or social media or internet, that students have gained lot of maturity and knowledge. And therefore, I feel it is our prime responsibility, and SME Chamber of India has taken lead to start an entrepreneurship cell in the education institutions. Sir, I assure you on behalf of SME Chamber of India that we will start this entrepreneurship cell and we will spread and encourage all the students from all parts of the Maharashtra to start with, to make them as a successful entrepreneur, as a startup unit. And for that, whatever support is required, guidance is required, we expect the same from Honorable Minister of MSME. So once again, I congratulate and all of you, and thank you Narayan Rane Saab for sparing his valuable time for coming here all the way from Delhi to Mumbai, to his hometown rather, or home state. And we wish you all the very best, sir, for your future associations with the with the SME Chamber of India and all the startup units. Thank you so much. Right? Thank you so much. Well, ladies and gentlemen, on that note, firstly, let's formally welcome none other than, and I think that deserves a standing ovation,
our Honorable Union Minister, MSME, Shri Narayan Rane. Let's give him a standing ovation. What an incredible personality he is. And with that, if we could request Salunke ji to felicitate our special guest of honor. Come on everyone, let the applause continue. Shri Narayan Rane ji, Honorable Union Minister, MSME, under his guidance, we seek support. It could be a pious moment to call none other than Mr. Salunke ji. Sorry, sir? Prabhakar Salunke ji. Yes, sir. Please, we'd love you to address. And firstly, congratulations on your award. Thank you. आजच्या या SME चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या 30व्या वर्धापनाच्या निमित्तानं भारताचे मध्यम लघुउद्योग विभागाचे आमचे लाडके नारायणरावजी राणे साहेब यांचं मनपूर्वक स्वागत आहे. आज भारतामध्ये जी सूक्ष्म आणि MSME उद्योगाची जी वाटचाल आहे त्या वाटचालीला आणि आमच्या सगळ्या नवीन युवकांना प्रोत्साहित करायच्या विविध योजना या बजेटमध्ये राणे साहेबांच्या माध्यमातून आदरणीय मोदी साहेबांनी आपल्यापर्यंत पोहोचवलेल्या आहेत आणि ते या संस्थेमार्फत या MSME मार्फत आपल्या सर्व युवकांपर्यंत त्या पोहोचणारच आहेत. आणि त्याचकरता हाच्या कार्यक्रमाचा अट्टाहास SME चेंबर ऑफ कॉमर्सने त्यांच्या 30व्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं आज घेतलेला आहे. वास्तविकता माझा जो ग्रुप आहे सुमित ग्रुप याचंही वय आज 31 वर्षाचं आहे आणि SME चेंबर ऑफ कॉमर्सचंही वयोमान आज बरोबर 30 वर्षाचं झालेलं आहे. आता दोघंही आम्ही जोरात आहोत आणि त्याचबरोबर नारायण राणे साहेबही या खात्याचे केंद्रीय मंत्री आहेत. तर त्यांच्या माध्यमातून आपल्या सर्वांना निश्चितच एक चांगलं पाठबळ व्यवसाय करण्याकरता मिळेल आणि भारताची जी 5 ट्रिलियनची आपली जी माननीय पंतप्रधान साहेबांनी जी आपल्याला जी महत्त्वाकांक्षा दिलेली आहे, जी मनोकामना केलेली आहे, ती सगळं पूर्ण करण्याकरता आपण सगळे MSME आणि ते पुढच्या सेक्टरमधले सगळे लोक तयार राहू. आणि आजच्या या कार्यक्रमाच्या 30व्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं मी चंद्रकांतजी साळुंखे, वास्तविकता माझी व्यवसायाची सुरुवात 1 लाख रुपयांनी झाली होती आणि त्यावेळेला मी या चेंबरच्या माध्यमातून पहिल्या जर्मनीचा दौरा साधारणतः 25 वर्षापूर्वी केला होता. आज कंपनीचा टर्नओव्हर 1000 करोडपेक्षा जास्त आहे आणि साधारणतः 2 ते 3 हजार करोड रुपयाच्या ऑर्डर पाईपलाईनमध्ये आहेत. म्हणून केंद्रीय नारायण राणे साहेबांनी आम्हाला थोडा वेळ द्यावा की त्या वेळेचा आम्ही निश्चित सदुपयोग करून हा ग्रुप या भारताच्या वाढीकरता आमचं योगदान निश्चित देईल एवढी मनोकामना परमेश्वराच्या चरणी मी व्यक्त करतो. आणि SME चेंबरचे चंद्रकांत साळुंखे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना मी सदिच्छा देतो. या कार्यक्रमाला आम्हाला बोलवलं, आम्हाला सहभाग दिला आणि असंच पुढचं काम करण्याची, आमच्या युवकांपर्यंत पोहोचण्याची आम्हाला ताकद द्या. आम्ही निश्चित चांगलं पुढचं काम करून एक हा ग्रुप IPO करता पुढच्या 2000 आम्ही टार्गेट ठेवलेलं आहे की 2025 साली 5000 कोटी रुपयाचा एक बिझनेस टर्नओव्हर घेऊन आपल्या पुढे घेऊ. म्हणून राणे साहेब तुमचे आशीर्वादही आम्ही अपेक्षित करतो. धन्यवाद. Yes, let's give him a big round of applause, none other than Mr. Chandrakant Salunke ji. देश के केंद्रीय मंत्री जी श्री नारायण राणे जी, जिनके पास आपके प्रगति और उन्नति करने की जिम्मेदारी माननीय पंतप्रधान जी ने दी है, उसके लिए आज अपने प्रोग्राम में उनका मैं तहे दिल स्वागत करता हूं. राणे साहेब, आज आपण केंद्रीय मंत्री म्हणून ज्या खात्याची धुरा सांभाळलेली आहे त्या माध्यमातून खऱ्या अर्थाने आज 6,33,00,000 MSME जे आहेत भारतामध्ये आणि जवळजवळ 8 करोड सेल्फ एम्प्लॉईड आहेत, त्यांची उन्नती, त्यांचा विकास करण्याची जबाबदारी आपल्याकडे आहे. आज पंतप्रधानांचं जे स्वप्न आहे की $5 ट्रिलियन इकॉनॉमी पूर्ण करायची आहे आणि मॅन्युफॅक्चरिंग हब करायचं आहे, हे स्वप्न कोण पूर्ण करणार? तर ही जनता करणार आहे, हे उद्योजकच करणार आहेत. भारताचे आज जर उद्योजक बघितलं तर त्यांची जी क्षमता आहे, क्षमता वाढते कारण आज लेवल प्लेइंग फील्ड आहे. तुम्ही जे काही आज नवीन योजना
त्यानंतर ज्या स्कीम किंवा त्याचे काही ॲडव्हान्टेजेस आणताय, ह्याचा खरा फायदा ह्या उद्योजकांना व्हायला पाहिजे आणि होत आहे आणि आणखीन मोठ्या प्रमाणात झाला पाहिजे अशी माझी अपेक्षा आहे. फ्रेंड्स, जो आज की ज़माने में हमारा एंटरप्रेन्योर्स का या हमारे इंडस्ट्री का एसएमई की क्या मांग है या क्या डिमांड है, एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो कि इंस्पेक्टर आज ऑलमोस्ट ख़त्म होते जा रहा है, सब ऑनलाइन होते जा रहा है, लेकिन उसमें भी लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस चाहिए. इसमें राणे साहब ने बहुत ध्यान देना जरूरी है. दूसरा, आज बैंकिंग सेक्टर से आज हमारे एमएसएमई को फंडिंग नहीं मिलती टाइम पर. 6 करोड़ 33 लाख एमएसएमई से हार्डली मुझे लगता है 1.5 लाख या 1.25 लाख एमएसएमईज आज बैंकिंग फाइनेंस एंजॉय कर रही है. एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए बहुत ऐसे कठिनाइयाँ है कि आज हमें वर्ल्ड मार्केट में अगर चाइना हो या दूसरे कंट्री के मुकाबले हमें लड़ना है या मार्केट में टिकना है तो बहुत सारी उसके लिए सुविधा उपलब्ध करनी चाहिए. तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि आज इंडस्ट्रियल लैंड, भारत देश में अगर कहीं पर भी आपको इंडस्ट्री लगानी है तो इंडस्ट्रियल लैंड अफोर्डेबल नहीं है. इंडस्ट्रियल लैंड के लिए मैं लास्ट वीक राणे साहब से मिला हूँ और पीयूष गोयल जी से भी मुलाकात किया है. राणे साहब, मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूँ कि आप इंडस्ट्रियल एसएमई इंडस्ट्रियल पार्क ऑल इंडिया के हर स्टेट में एक लगाने की ज़रूरत है, जिस माध्यम से आप 100% जो एक्सपोर्ट प्रमोशन कंपनी है उनको फ़ायदा, टैक्सेशन जो हॉलीडे मिलता है, वैसे हमारे एसएमई सेक्टर को मिलना चाहिए. एक मैं आपको सजेशन देता हूँ. और दूसरा यह है कि बैंकिंग सेक्टर के साथ आपको हर बार उनके साथ हर 3 महीने में एक बार मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर के अलावा दूसरा कोई भी हमारे एसएमई सेक्टर को एम्पावर नहीं कर सकता है. बैंक के पास इतना पैसा पड़ा है, आज हमारे एंटरप्रेन्योर्स सही मायने में इंस्टॉलमेंट भरते हैं, इंटरेस्ट भरते हैं. नीरव मोदी या मल्ल्या जैसे हमारे लोग भाग नहीं जाते, हमारे उल्टा ये लोग यहाँ बैठ के एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर रहे हैं. तो मेरी राय है कि आपका जो काम करने का तरीका है, आपने जो 1995 से मैं आपका काम देख रहा हूँ, आपने अगर मान लिया ये करना है तो आप करके दिखाएंगे. तो एसएमई सेक्टर को अगर हमें एम्पावर करना है तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको आगे बढ़ाइए. और मित्रों, आने वाले इलेक्शन में हमारे एंटरप्रेन्योर्स खुश है तो मुझे लगता है मोदी जी दोबारा आएंगे. और यह काम जिम्मेदारी राणे साहब आपके पास है. हमारे एंटरप्रेन्योर्स को, हमारे एसएमई सेक्टर को आप बढ़ाइए आगे, उनको एम्पावर कीजिए. आणि मला असं वाटतं की या क्षेत्रामध्ये जितकं मोठं काम आहे, हे मंत्रालय पूर्वी इतर मंत्री असायचे ते नुसते नामाला, पण तुम्ही आल्यापासून याच्यामध्ये एक चैतन्य निर्माण झालं आहे, लोकांमध्ये एक अपेक्षा निर्माण झालेली आहे की या माध्यमातून आपल्याला काम, जसं महाराष्ट्रात तुम्ही काम केलं तसं त्या पद्धतीने तिकडे करण्यासारखी संधी आहे. आणि मला वाटतं की येणाऱ्या 1 वर्षामध्ये आपल्याकडे भरपूर अशा काही डेव्हलपमेंट करता येतील. आणि एसएमई सेक्टरला जर मोठं करायचं असेल, भारताला जर मोठं करायचं, यांना सक्षम करण्याची गरज आहे. आणि आपणास विनंती करतो की यामध्ये आपण लक्ष घालावं, त्यांचे काय अडीअडचणी सोडवण्याचा प्रयत्न करावा. फ्रेंड्स, आय एम थँकफुल टू राणे साहेब टू अटेंडिंग दिस प्रोग्राम. आणि मी आपलं स्वागत करतो आणि आपल्याला धन्यवाद देतो आणि आपण आपलं मार्गदर्शन करावं अशी आपल्याला विनंती करतो. इंडिया एसएमई समिट में मैं आपके सामने हिंदुस्तान के इंडस्ट्री के बारे में, एसएमई के बारे में, उद्योग के बारे में मैं कुछ बोलना चाहता हूँ. इस समिट में मेरे साथ उपस्थित जो एसएमई चैम्बर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं चंद्रकांत साळुंखे जी, आदरणीय अनूप सहाय एल&टी ग्रुप, आदरणीय डिकोस्टा जी, आदरणीय बद्रेश पाठक जी, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, मीडिया के प्रतिनिधि, उपस्थित सभी भाइयों और बहनों और दोस्तों, चंद्रकांत साळुंखे पिछले 30 साल से ज़्यादा इस क्षेत्र में एमएसएमई चैम्बर ऑफ इंडिया के माध्यम से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं. मेरी उनकी अच्छी तरह से पहचान है. मैं महाराष्ट्र में भी 4 साल इंडस्ट्री मिनिस्टर था, तो परेशान करने का उस वक्त भी उन्होंने काम किया था. और मैं बोला यहाँ से थोड़ा दूर जाओ, दिल्ली गया
तो वहाँ भी परसों के दिन पहुँच गए, बोला साहब आपको आना है, मगर मैं आज आया उसके कहने पर नहीं, मुझे हमारे महाराष्ट्र के उद्यमी इंडस्ट्रियल लोगों को मिलना था। हमारे पीएम साहब का, माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी जो हमारे उद्यमी से जो अपेक्षा करते हैं, उम्मीद रखते हैं, वो आप तक पहुंचाने की मैं कोशिश करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। आप सभी से मिलकर मेरे को बहुत खुशी हुई, सभी से। वैसा मुंबई आने का मौका मिलता है, मैं तो मुंबई वाला है पहले से, मगर अभी सेंट्रल मिनिस्टर होने से पूरे देश में कोई न कोई राज्य में जाना पड़ता है। मोदी साहब ने कहा अभी नॉर्थ इंडिया के स्टेट में जाइए। अभी मेरे को एक स्टेट में, नॉर्थ के स्टेट में जाना है जहां हमारी बॉर्डर चाइना या पाकिस्तान को लग के है। ऐसे एक जिले में, एक गांव में, एक घर में 24 घंटा रहना है। अभी अप्रैल में मैं जा रहा हूं, इसलिए मुंबई आना कम होता है जब मौका मिलता है। और हमारे उद्यमी से मेरा काफी संबंध है। महाराष्ट्र में 4 साल तो मिनिस्टर था मैं, 4 साल। सब लोग पहचान के है, बड़े से अगला सब, अंबानी बोलो, सब जितने भी उद्योजक है अपने संबंध है। देखिए, मैं समझता हूँ कि भारत में मुंबई है, महाराष्ट्र में देश के अर्थव्यवस्था में 34% हिस्सा सेंट्रल बजट का मुंबई से जाता है, मुंबई से जाता है 34%। इतना महत्व आप लोग को है कि आप लोग बिजनेस करने से टैक्स भरते हैं, वो ये देश के किसी भी राज्य से हमारा जो योगदान है वो ज़्यादा है। इसलिए आपको हमारे देश में, भारत देश में महत्व है, और इसलिए आपको मिलना, आपके पास अपेक्षा रखना, आपको गतिमान करना, प्रोडक्शन बढ़ाना, रोजगार बढ़ाना, उत्पादन बढ़ाना, देश का जीडीपी बढ़ाना, भारत आत्मनिर्भर करने के लिए आपकी योगदान आपका चाहिए। इसलिए मैं आज का कार्यक्रम स्वीकार किया, आपके सामने हूँ। आदरणीय हमारे दोस्त चंद्रकांत सावंत के लिए बहुत उम्मीदें यहाँ रखी है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। आप लोग फैक्ट्री चलाते हैं, उद्योग चलाते हैं, वो फैक्ट्री में यूनियन होती है। आपको तजुर्बा होगा, यूनियन लीडर का हमेशा मांग ही करते हैं, पगारवार दो, बोनस दो, ये दो, वो दो। ये कुछ उससे कम नहीं है, कुछ नहीं। वैसा हमें ये देना चाहिए, वो देना चाहिए, वो देने, हमारा तो वही काम है। हम इंडस्ट्री मिनिस्टर है। हमारे देश की इंडस्ट्री, वो माइक्रो हो, स्मॉल हो, मीडियम हो या उससे भी बड़ी हो, उनको कुछ दिक्कतें आती है, तकलीफ है, वो सॉल्व करना, हल करना हमारा काम है, काम है। मैं उनको हमेशा कहा, जो भी तकलीफ होगी आप मेरे पास लेके आइए। अभी बैंकिंग का कहा, परसों जब आए, मतलब उसी दिन में हमारे सेक्रेटरी को कहा कि आप ये जो कह रहे, जो जानकारी दे रहे, उसके बारे में फाइनेंस मिनिस्टर को लेटर लिखो, और मैं जाके खुद मैडम से बात करूंगा इस सब्जेक्ट पे कि बैंक कॉपरेट नहीं करते हैं हमारे उद्यमी को, भले माइक्रो हो, स्मॉल हो या मीडियम हो, उनको योगदान देने के लिए आप इंस्ट्रक्शन दीजिए सभी बैंकिंग को। ये मैं कहने के लिए जा रहा हूँ। एक बार उनको मिलके मैं कहा कि ये दिक्कतें हैं, उन्हें एक्सेप्ट किया। मैं रानी जी, मैं इसमें जो आप कहते हैं उसमें मैं उस तरह का बैंकिंग को इंस्ट्रक्शन देने का मैं काम करूँगा। देखिए, आज यहाँ हमारे साउंड के साथ आप ही ना, अभी अभी आपका स्पीच हुआ प्रभाकर साउंड के, बरोबर? हाँ, देखो आप इतने अलग अलग नाम से होगे, साउंड के एक ही होगा, एक ही होगा। हमारे चंद्रकांत सावंत ने 1 लाख से 2000 करोड़ का आदमी बनाया, खाली सावंत के ही बनाया। मगर नहीं, मैं मेरे सामने देश का सभी उद्यमी है, उनको जो भी शिकायत है
मैं मुंबई में सैटरडे संडे आ जाए तो कभी भी मेरे तक पहुंचाने का काम करो, मैं हल जरूर करूंगा। मैं बातें करते रहने वाले में से नहीं, मैं काम करने में से। महाराष्ट्र में 34 साल मैं कोई न कोई मंत्री पद पे था, लास्ट में मुख्यमंत्री बन गया, अभी मैं दिल्ली में आ गया हूं। तो मुझे हमारे उद्यमी का जो तकलीफ है, दिक्कत है, वो दूर करके प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, कंपनी का टारगेट बढ़ाने के लिए हर टाइप की मदद हम एसएमई के माध्यम से बहुत सारे प्रोजेक्ट, ये बजट में काफी पैसा मोदी जी ने दिया। देखिए, कोरोना के कार्यकाल में जो इंडस्ट्री बंद हो गई उसको वापस चालू करने के लिए क्रेडिट गारंटी योजना में पीएम साहब ने 5 लाख करोड़ दिए। 5 लाख करोड़, हम 5 लाख से 3,76,000 करोड़ हमने बांटे, लोन दिए और फैक्ट्री चालू होगी। वो 22-23 में, 21-22 में हमारा उत्पादन कम नहीं होगा, जीडीपी कम नहीं होगी, या जीएसटी भी कलेक्शन कम नहीं हुआ, ये तीसरे साल में बड़ा उल्टा। इसका मतलब पंतप्रधान जी ने क्रेडिट गारंटी का इसमें जो 5 लाख करोड़ दिए, उससे ये फायदा हुआ। हमारे पीएम साहब जब पीएम बने 2014 में बने, 2014 में भारत दुनिया के अर्थव्यवस्था में 10वें क्रमांक पे था, 10th क्रमांक था। आज 8 साल के बाद हमारे पीएम साहब ने अपने देश को 5वें क्रमांक पे लाया, 5वें क्रमांक। अभी उन्होंने कहा है कि 2030 में भारत 3रे क्रमांक पे आना चाहिए, अमेरिका, चाइना, भारत होना चाहिए। इसलिए हमें काम करना है, और इसलिए काम करने के लिए हम अलग अलग योजना है, उद्यमी की जो मदद है वो देने के लिए तत्पर है। हमारे डिपार्टमेंट में हर स्टेट में जा रहा हूं, हर स्टेट के उद्यमी को मिल रहा हूं, हर यूथ जो आज के यूथ हैं उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हम टेक्निकल सेंटर देके कर रहे हैं कि देखो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से उत्पादन बढ़ता है, तो उत्पादन बढ़ाना है। जो माल अच्छे, जैसा चाइना एक वक्त पूरे दुनिया में 64% मार्केट उन्होंने कैप्चर किया था, अभी बीच में तो उनके काफी इंडस्ट्री बंद हुई। हमें भी उस तरह उत्पादन बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। हम 2030 में 3रे क्रमांक में जाना है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है, हमारे पीएम साहब की अपेक्षा, घोषणा पूरी करना है। तो हमारे डिपार्टमेंट आपको हर टाइप का सहयोग देंगे। साळुंखे साहब को इतना ही कहूंगा, आप लीडरशिप कर रहे हैं उद्यमी की, जो भी तकलीफ है मेरे पास, उसमें पूरी तरह से लगन देके मैं हल करते ही रहूंगा। कोई रीजन नहीं बताऊंगा, रीजन नहीं कर बताऊंगा। मैं भी एक छोटा उद्यमी हूं, मैं जानता हूं तकलीफें किस टाइप की आती है, और इसलिए मैं कहता हूं आज जो मैं आपके सामने आया हूं, तो भारत को 3रे क्रमांक में लाना है तो कौन ला सकते हैं? उद्यमी, इंडस्ट्री के लोग। एग्रीकल्चर से तो पॉसिबल नहीं है। आज दुनिया भी कोई कंट्री, कोई स्टेट इनको डेवलपमेंट करना है, जीडीपी बढ़ाना है, एक्सपोर्ट बढ़ाना है, तो उनको इंडस्ट्री बढ़ाने से, उत्पादन बढ़ाने से, एक्सपोर्ट करने के लिए इंडस्ट्री में ही ध्यान देना होगा। इसलिए 1 क्रमांक पे भारत के टैक्सेशन में बड़ा हिस्सा, ग्रोथ रेट में बड़ा हिस्सा इंडस्ट्री के लोगों का है, इंडस्ट्री के लोगों का है। आज देखिए, जब हमारे मोदी साहब कहते हैं कि हम दुनिया के अर्थव्यवस्था में 3रे क्रमांक पे आना है, मैं एक आप लोग को सबको मालूम है अमेरिका 1 नंबर पे है। अमेरिका का पर कैपिटा इनकम 56 लाख है आज के तारीख में, ब्रिटेन का 48 लाख है, अपना 2 लाख है, 2 लाख में भी कम है, 1,97,000 है। तो आपने को कहाँ तक जाना है, तरक्की कहाँ करना है, पर कैपिटा इनकम बढ़ाना है,
तो पर कैपिटा इनकम बढ़ाने के लिए इंडस्ट्री शुरू होनी चाहिए, प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए, एक्सपोर्ट बढ़ाना और इंपोर्ट कम करने के लिए इंपोर्ट जो चीज का जो माल का होता है, हमारी नीड जो है, जो इसके लिए हम इंपोर्ट करते हैं, वो पूरा करने के लिए इंपोर्ट जो प्रोडक्शन का हम करते हैं इंपोर्ट, वो यहाँ निर्माण करने की कोशिश हमारे उद्यमी ने करना चाहिए। उद्यमी उसके लिए आवश्यक टेक्नोलॉजी, आवश्यक लोन, जो भी चीज लैंड जो भी चाहिए हम देने के तैयार है। हम अभी प्राइवेट इंडस्ट्रियल एस्टेट को परमिशन दे रहे, नजीक मेरा प्रस्ताव है, फाइनेंस में गया कि ऐसा नहीं कर महाराष्ट्र MIDC, अभी प्राइवेट भी MIDC किसके पास जगह हो 500 एकड़ 200 एकड़ 1000 एकड़ तक हो तो हम उसको अनुमति देंगे। इंडस्ट्री तैयार करो और चलो। तो हम हर तरह से तैयार है। उद्यमी ने ये अपना देश आत्मनिर्भर बने, दुनिया में तीसरे क्रमांक में आए और आने के लिए अपना भी योगदान उसके लिए आवश्यक है, ये समझ के योगदान देना मैं समझता हूँ उसके लिए आपकी कोशिश होगी। इसलिए मैं आपको मिलके ये मेरे विचार आप तक छोड़ूं। हमारे PM साहब के विचार है, उनकी अपेक्षा है, उनकी घोषणा है, वो पूरी करने का काम आप ही लोग कर सकते हैं। तो आप ही लोग को एक कहने के लिए मैं आज यहाँ आया। उपस्थित माझ्या सर्व उद्योजक बंधू भगिनीनो, का शेवटी यांनी मराठीत सुरू केलं, मी मराठी नाही बोला, राणे अरे मराठी आहे, महाराष्ट्रात बोलतात आणि हिंदी बोलून गेले। इसमें से कोई भी कल आवाज उठा सकता है, मीडिया के लोग भी यहाँ हैं, इसलिए वो थोड़ा मराठी भी बात करूं। मी देशाचा केंद्रीय मंत्री आहे, MECB आहे, माझ्याकडे विभाग आहे। माझा विभाग एक महत्त्वपूर्ण विभाग आहे, देशातली इंडस्ट्री उद्योगधंदे यांना प्रोत्साहन देणं, उद्योग तयार करणं, उद्योगाला लागणारी साधन सामुग्री, मशिनरी, आधुनिक टेक्नॉलॉजी उपलब्ध करून देणं, आधुनिक टेक्नॉलॉजीची माहिती यूथला, तरुणींना त्यासाठी प्रशिक्षण देणं, त्याची माहिती देणं, आपण इम्पोर्ट काय करतो, कुठल्या देशात आपण एक्सपोर्ट करतो, तिथे काय मागणी आहे, याची माहिती आमचं डिपार्टमेंट आज देत आहे, करत आहे। मी आज मुद्दामून आलो, आमंत्रण स्वीकारलं ते यासाठी की मला उद्योजकांना भेटता येईल, बोलता येईल। देशाची प्रगती करायची असेल कुठल्या देशाला आणि राज्याला, तर उद्योग धंदे वाढवल्याशिवाय, उत्पादन वाढवल्याशिवाय शक्य नाही आहे। म्हणून तुमच्यावर, तुम्ही देशाला महासत्तेवर पोचू शकता, आत्मनिर्भर करू शकता, माननीय मोदी साहेबांची इच्छा अपेक्षा पूर्ण करू शकता। म्हणून प्रेमाचे 2 शब्द तुमच्यापर्यंत पोचवावे या स्तुत्य हेतूने मी इथे आलो होतो आणि मी माझे विचार तुमच्या समोर ठेवले। जशी प्रगती आमच्या साळुंखे साहेबांनी केली, तुम्ही याहीपेक्षा मी शुभेच्छा देतो तुम्हा सर्वांना। 5,000 कोटी नाही, उद्या 50,000 कोटी झाले। आपल्या देशात पण मोठे उद्योजक आहेत, 5 लाख 6 लाख 7 लाख जगात श्रीमंतामध्ये त्यांचे पण नंबर, त्याच्यामध्ये भारत आहे। तर त्यांच्यापर्यंत पाठलाग करा, जगातल्या मोठ्या उद्योगांपर्यंत पाठलाग करा। चायनामध्ये अनेक कारखाने मोठमोठे सप्लायर बंद झाले, पण ते जे कारखाने बंद झाले ते कारखान्याचं प्रोडक्ट साऊथ कोरिया, इंडोनेशिया सारख्या देशांनी त्या प्रोडक्टची फॅक्टऱ्या टाकल्या आणि ते आता दुसऱ्या देशातला निर्यात करतायत। भारताने हे अनुकरण करायला पाहिजे, भारतातल्या उद्योजकांनी हे अनुकरण करायला पाहिजे। चायनाचं जे प्रोडक्शन बंद पडलं ते प्रोडक्शन आपण घेऊ, चायना जिथे एक्सपोर्ट करत होतं तिथे आपण एक्सपोर्ट करायला पाहिजे। आपला जर निर्धार असेल की भारत महासत्ता बनावा, जगाच्या पाठी 3ऱ्या क्रमांकावर यावा, ते प्रयत्न तुमच्याकडून झाल्यास शक्य आहे। पर कॅपिटल इन्कम मायक्रो मोठ्या प्रमाणात कंपन्या जवळपास 6 कोटी आहेत। मायक्रो मधील उद्योजक
जर स्मॉलमध्ये गेले, लघुमध्ये गेले, लघुचे मीडियममध्ये गेलं त्याला प्रगती म्हणू. मायक्रोमध्ये राहूनच नाही, स्मॉलमध्ये राहूनच नाही. स्मॉलचा उद्योजक काही वर्षांनी तरी तो मीडियममध्ये जायला पाहिजे, मोठ्या उद्योगामध्ये जायला पाहिजे. ही प्रगती साध्य केल्यास भारत पर जगाच्या पाठीवर अर्थव्यवस्थेमध्ये लोक नाव घेतील, जगाच्या पाठीवर उल्लेख करतील. अशी प्रगती केल्याशिवाय राहणार नाही असं मला स्वतःला वाटतं. आणि म्हणून माझ्यासाठी आपण म्हणतो लक्ष्मी म्हणजे प्रगतीचं एक प्रतीक आहे. माझ्यासाठी भारताच्या प्रगतीसाठी उद्योजक हीच माझी लक्ष्मी आहे असं मी समजतो, हीच माझी. आणि म्हणून लक्ष्मीला विनंती नाही, मी नमस्कार करतोय. प्रगती करा. तुम्हाला ऑल दी बेस्ट. सगळ्यांना शुभेच्छा देतो आणि माझं मनोगत इथेच थांबवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. Ladies and gentlemen, a big round of applause. What a inspirational address that was, and thank you so much for the standing ovation. None other than the Honorable Union Minister MSME, Shri Narayan Rane ji. धन्यवाद राणे साहब, आपने जो बहुत बड़ा आशीर्वाद हमारे एंटरप्रेन्योर्स को दिया है और मुझे लगता है आपका जो जोश और जो इंटरेस्ट है तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में हमें बहुत अच्छी उन्नति देगा, विकास देगा. मित्रों, we should thank to Sri Rane sahab for giving big hand that to giving you the blessings and support. So we will take a exactly 15 minutes break because we have a next panel discussion, very important panel discussion where you are going to listen the entrepreneurs, those who have succeeded in their business, what kind of the strategy they have adopted and what kind of their future plans. So in exactly 15 minutes we will join here and then we can have a interaction in that. Thank you very much. All the best. Thanks for Sufin and Gati for providing support. Thank you.